Hello friends, how are you all? Today we are going to see chapter 5, that is editing a document. Editing means what? Editing means to do the changes like modification. If you want to do any sort of modification like for the text, maybe word, sentence, okay. तो आप कुछ भी changes करना चाहते हो तो वो changes आप apply कर सकते हो with the help of the editing a document. So yes, let us see. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नोइंग कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. सो इफ यू वांट टू नो अबाउट इट यू कैन गो टू माय चैनल और द आई बटन इन विच यू विल सी अबाउट इट चैप्टर 4. और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. आई टोल्ड एट द फर्स्ट ओनली दैट 91% आर नॉट सब्सक्राइबिंग एंड दे आर वाचिंग माय वीडियोस. थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन कि हाँ एटलीस्ट मेरा वीडियो देखते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. But yes, if you will subscribe then it will be more appreciating. Okay, so let's start. So first of all, undo and redo. Now what is this undo? Undo means to cancel the last action, right? जो भी last action आपका जो होता है उसे वो cancel करता है. Like मैंने यहाँ देखो, just I am doing a formatting, I am just changing the color, right? मैंने font color change कर दिया. Now I want to go back. मुझे फिर से वही black color चाहिए. So what I will do, I will go by this quick access toolbar. Okay, I have many options. देखो यहाँ undo का option है, right? It will come back to its original color. Okay, again I will do and I will show you the different way. That is by Control Z as the shortcut key. Control and Z you will press together. Okay, so this way you can do it. Now redo. Redo means what? To cancel or revert the undo action. जो भी आपने undo action किया था, right? जो आपने कलर के लिए किया था, देखिए मैंने undo किया तो क्या हो गया, that the color came back, black color आ गया instead of the font color which I have given. Okay, now what I will do, I will go with redo option. तो redo में क्या करेगा, control plus y, so it will come back, यानी ये formatting फिर से वापस आ जाएगा. Okay, so control plus y or you can go by this quick access toolbar. Now selecting text. अब select text करना है, so for that yes you can use the keyboard and mouse. So first we are going with the mouse action and with that also the keyboard. तो यहाँ अगर आपको कोई word select करना है then by the mouse you can make a double click. So you can see just I will make a double click, right? तो मैंने ये double click कर दिया. Okay, so by that the selection of the word is done. If you want to select a sentence, अगर आपको sentence select करना है then you will press the control key. पहले आप control key press करेंगे and then you will click on it. Just see I have kept the cursor first. पहले cursor आपको रखना है, control and then you will select. Okay, so it is done the selection. Clear to everyone? Again I am showing what you will do. You can see here, right? तो मैंने ये selection कर दिया. Now about the paragraph. Even you can drag it. आपको ऐसे drag करना है. Yes, you can drag it also. Or you can go by the shift key. Shift key जैसे आप cursor रखोगे and shift key, by that you can go towards the right side. If you want to do the selection on the left side तो आप left side से selection कर सकते हो. Okay. Now the paragraph. So for the paragraph you can make a double click on the left margin. Okay, or you can make a triple click on the whatever you are having the paragraph. देखो जैसे ये मैं select कर रही हूँ, I have made a triple click. Just see. Okay, you can see here, and then I am also going by the margin where I have made a double click. Okay, so it is selecting. Now the large block text, in that what you have to do, आपको क्या करना है, click at the beginning. यानी जैसे ये click किया मैंने at the beginning, then I will press the shift key and then I will click at the end of the text. So what is there, the selection is done. Okay, again I'll keep the cursor here, then I will press the shift key और उसके साथ आप mouse से click करोगे at the end where you want to keep the selection till the end. Entire document. So what you can do, आप यहाँ से जो margin है वहाँ से triple click कर सकते हो. So yes, by the triple click you can see that the whole document is selected. यहाँ पूरा document select हो गया है. Or you can go by Control plus A, that is the shortcut key. अब है consecutive text. Consecutive text means what? That the continuous, आप जो भी text continue में आपको select करना है, for that you want to do, then what you have to do, see here, the bring the mouse pointer to the desired location
and click and hold down the shift key. आपको क्या करना है, shift key को press करना है and then yes you will do the selection. Okay, so this way you can do it. ये देखिए, I'll just keep the cursor, shift key, and then I have kept it the cursor at the end, right? So this way. Next is non-consecutive. So what you can do, कुछ words को आपको जैसे bold करना है, right? Some of the words of the paragraph like your mouse pointer है. अब मैं क्या करूँगी, control press करके I want this also to be selected and I want bold. Okay, I want here that again I will select control key and I will give the dark red color effect. Yes, so this is non consecutive यानी जो continuous में नहीं है. Okay, so this way you can do it. Next is copy and paste. Copy paste यानी क्या, that you want to make a duplicate copy. आपको duplicate copy उसकी बनानी है, right? So here there are different methods. So first method आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हाँ, here it is a clipboard in home tab. बट दिस इज नॉट एक्टिव, अभी एक्टिव नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट सिलेक्टेड एनी ऑफ द पार्ट. अब हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ एक्टिव हो गया. तो यहाँ क्लिक करेंगे कॉपी बटन एंड देन यू विल क्लिक ऑन पेस्ट. तो आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे, राइट? सो हियर इट विल बी पेस्टेड. Just see it over here that what I can do over here. I can paste it. I will click over here. तो paste हो गया. Okay. Or we have the second option, that is the shortcut key control plus C and control plus V. or you can make a right click. आप right click में भी आपको यहाँ option मिल जाता है, that is copy and paste. Okay, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है. Then moving. Now your copying means to make a duplicate copy. वो वहां भी रहेगा, right? As I told you, मैं यहाँ फिर से करके आपको दिखा रही हूँ, right? I will click on copy and then I will click on paste. तो यहाँ आप देख सकते हो that it will come over here also. So it is make a duplicate copy. लेकिन अगर moving कर रहे हैं, if you are moving means what, that it will be moved from that place, right? तो वो location से वो दूसरी location पे चला जाएगा. It will go to the another location. So what I will do, I will click on cut. So you can see that it is disappeared, but I will go it back to it. तो मुझे यहाँ paste फिर से कर देना है. Yes, I can paste it. Okay. Now the another way, that is control plus X and control plus V, and right click in that, cut and paste. Okay, I will also show you with the mouse. मैं यहाँ mouse action से भी it's easy to do. I will just show here. मैंने ये पूरा select कर लिया. Now I will press the control key and मैं drag करूँगी. I have pressed the control key and I have dragged. So that is also making a copy of it. Okay, मैंने control Z कर दिया for undo. Now मुझे यहाँ क्या करना है, I want to shift it. तो मैं सिर्फ यहाँ से cursor को लेकर, means whatever I have selected, उसको लेकर मैं cursor से move करूँगी. So yes, you can see here that it is moved. Okay, वो उसके location से चला गया. So that again I want to go back. So what I have to do? Come on, write it in the comment box. Write in the comment box. I have done it, right? So you do it in the comment box. Write it what I have done for coming back to that place. Okay, now find and replace. Find and replace यानी क्या, ढूंढना, right? To search. Everyone know that there was in Three Idiot. Three Idiot में एक means एक था moment, एक scene था जिसमें उन्होंने बताया था कि replace किया था. I don't want to say that word, but it is very comedy, right? So yes, I'll just show you over here कि हाँ भाई, find where it is in home tab, editing group, you have the find option. In that there are three options over there: find, advanced find and go to. तो I'll just click on find. Okay, और मैं यहाँ लिखती हूँ editing. Okay, so you can see how many places we are having editing. दिख रहा है आपको? Yes, it is selected over here. Editing जहाँ जहाँ लिखा है, wherever it is written, so there you will see, and here it will show also the result. Okay, so this is about it. Now yes, the shortcut, yes, you must know control plus F, and then yes, replace. Now what is replace? तो अगर कहीं आपने find किया that there is any mistake and you want to replace it, right? So maybe it may be a name, it may be any word also.
तो मुझे कहीं चेंजेस करना है, सो इंस्टेड ऑफ एडिटिंग मुझे लिखना है चेंजेस, राइट। एडिटिंग की जगह मुझे क्या चाहिए, आई वांट टू गो फॉर द चेंजेस, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन रिप्लेस, और आई कैन गो विद द शॉर्टकट की, मेरे पास शॉर्टकट की भी है Ctrl+H, एंड यू विल सी इट ओवर हियर कि एडिटिंग इंस्टेड ऑफ दैट आई वांट चेंजिंग, ओके। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है, हियर यू गेट द ऑप्शन ऑफ रिप्लेस ऑल, ओके। तो रिप्लेस ऑल, इन दैट व्हाट यू विल सी, रिप्लेस मींस इट विल रिप्लेस ओनली वन टाइम, एक ही बार वो रिप्लेस होगा, एक ही वर्ड में वो रिप्लेस होगा, व्हाइल रिप्लेस ऑल मींस इन द होल डॉक्यूमेंट, जहां भी एडिटिंग लिखा होगा वहां चेंजेस होकर आएंगे, दैट इज चेंजिंग। सी आई विल गो विद द रिप्लेस ऑल। See here it is written all done. We made 3 replacement because हमने 3 जगह पे सर्च किया था. That 3 places it was finded that editing word. Okay. अब मुझे क्या करना है? Again I will go back. तो मुझे क्या करना चाहिए? So again I got it, editing. Okay. Now in find we have advanced find also. आपके पास advanced find में क्या है कि वो match करना चाहिए. The case must match, that is capital, small, everything. Okay. Find whole words only. जो whole words है उसको ही find out करेगा. Okay. English which has sound in English, that all you can find it. Okay. So many options are there. Okay, now the next one, that is about the spelling and grammar. Spelling and grammar, हम लोग कितनी बार mistakes करते हैं, and after that you must have seen कि here the wavy lines will be shown. तो ये red wavy lines आपको दिख रही है, that is for the spelling. Okay, so what we have to do for that, there are different methods over here. You can go to the review tab. आपके पास review tab में proofing group में option है spelling and grammar. You have that option. और यू कैन गो बाय द शॉर्टकट की F7. अगर आपका F7 नहीं वर्क कर रहा है तो मेन्यू ऑफ द लैपटॉप, इन दैट देयर इज अ फंक्शन की, तो उसे ऑन करने के बाद F7 यानी ऊपर टॉप में जो फंक्शन कीज है उसे प्रेस करोगे, देन ओनली इट विल वर्क, ओके। और यू कैन मेक अ राइट क्लिक, देखो यहाँ राइट क्लिक में भी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, ओके। इन द राइट क्लिक यू गेट द ऑप्शन, और यूजिंग द डायलॉग बॉक्स, जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, राइट, आई विल गेट इट ओवर हियर, देखो F7 में प्रेस करूंगी, सॉरी, okay, you can see here the dialog box. This is the dialog box by which you have to work it. तो आपको select करना है and then it will be replaced, वो replace हो जाएगा, okay. Same way is now about the grammar. Grammar, हम लोग grammatical mistakes भी करते हैं, right, where we have to use capital, small, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, you have to go to spelling and grammar. Okay, in grammar there are blue wavy lines also, blue wavy not, it is a double line, आपको देखना होगा क्या, हाँ, yes, let me do it one. Okay, okay, you can see here there are box, okay, so here you can see blue double line, I will just zoom it that thing and you can see it over here. So when you will make a right click, it will give you the options, आपको यहाँ बहुत सारे options मिल जाएंगे. So yes, you can select it or you can also ignore it. We will go for selection, okay. Then yes, the shortcut key for thesaurus, yes, F7 I have told you. Now thesaurus means what? That is like a synonym. अगर आपको यानी कोई word का दूसरा meaning चाहिए या replace करना है, if you want to replace instead of that, तो आप क्या कर सकते हो? You can go with the thesaurus. Again, it will come to the review tab, proofing group. You have the option of thesaurus. Even we have the shortcut key. हमारे पास shortcut key है, that is shift plus F7, okay, and right click तो आपको पता ही है, right click, yes, I will go to the synonyms option, okay. If we don't get it तो वो उसकी जगह पर रह जाएगा, right. You can see here now, instead of dialog box, here you have many of the options, okay. अब देखिए मैं using पर click कर रही हूँ, there also I will have many of the options, okay. So this options you will get it. होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर, एडिटिंग के बारे में कि कैसे एडिटिंग करना है. अगर कोई क्वेरी है देन यू कैन
put on the query in the comment box. Thank you everyone.